Hi, in this video I'm going to discuss four of my favorite mid-cap IT companies, and I'm going to discuss how I'm going to trade on them. Please consult your financial advisor for investment and trading ideas for trading decisions. मैं यहाँ पे चार मेरी फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट्स IT मिड कैप कंपनीज में बात करूँगा, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट माइंडट्री, इज़ नॉट वन ऑफ देम फॉर दिस वीडियो. माइंडट्री भी मेरी एक फेवरेट है. So let's start this video. One of the things is this is a chart of Emphasis. So if you look on a monthly basis, it has had a wonderful dream run. और अगर आप देखो कि पास्ट में ऐसे ड्रीम रन के बाद जनरली एक मल्टी मंथ कंसोलिडेशन में जाती है, and then it makes the next move, but here also we see there has been a considerable run. And going forward, one of the things which I would like to say is, you see there is a very big upper wick over here on a daily chart. So this was the all-time high in the last session, and then there was some sell-off. And if you look into, as I say, मैं हमेशा past को स्टडी करता हूँ, दिस इज़ एग्जैक्टली द टाइप ऑफ पैटर्न जो हमेशा रिकरिंग रही है इसके पास्ट में. एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इट विल ट्राई टू डू. सो हियर आप देखो कि ये एक नई इसकी ऑल टाइम हाई थी, फिर वो रन जाके जब ये अपर वीक ऐसे आती है तो जनरली इट्स फॉलोड विथ फॉल विच एक्चुअली ट्राइज टू वैलिडेट द लास्ट सपोर्ट रीजन. सिमिलरली यहाँ पे जब ये सेल-ऑफ आया, ये जाके लास्ट जो इसका सपोर्ट था इस रीजन में, इसको वैलिडेट किया. एंड सिमिलरली ओवर हियर वी कैन सी दिस टाइम आल्सो इट वेंट एंड had a validation. So going forward, one of the things I can say is 1600 में multiple supports इसको मिली है. So if it ever comes in those levels, I would be very much interested to think about some investment. और ये एक बहुत ही नैरो रेंज में थी प्रीवियसली. अगर आप इसका चार्ट देखो बिटवीन 1800 and 1600, so it was very much consolidating in this range since start of 2021. So ये जनवरी से ये towards even till last month इस consolidation में थी, and then it actually eventually broke out, and now it is trying to find a support near about at 1900 levels, and right now is trading above 2000. So going forward, I think there should be a dip, and as we saw in the previous cases, यहाँ पर जब भी कोई रेजिस्टेंस आता है वो प्रीवियस सपोर्ट में जाती है. सो एज पर लॉजिक इट शुड ट्राई एंड वैलिडेट टच टूवर्ड्स 1900, एंड दैट माइट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेवल टू हैव अ वॉच. एंड थियोरेटिकली अगर 1900 में नहीं मिली तो डेफिनेटली 1800 में इसको सपोर्ट मिल जाएगी. सो दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक टू कीप अ टैब ऑन एम्फेसिस फॉर नाउ. ऑफ कोर्स इन पैटर्न्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि देयर इज़ ऑलवेज आफ्टर अ येलो, आफ्टर अ ग्रीन, यू कैन सी देयर इज़ अ ब्रेक डाउन, राइट. आफ्टर अ ग्रीन देयर इज़ अ ब्रेक डाउन, आफ्टर अ ग्रीन देयर इज़ अ ब्रेक डाउन. और लेकिन दिस टाइम द ब्रेक डाउन वॉज वेरी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन अ सपोर्ट राउंड अबाउट दिस रीजन. ये रीजन में वो ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है. सो थियोरेटिकली आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ इट मूव्स इवन फर्दर, एंड दैट मूव फॉर इन ऑर्डर टू उसको फाइन ग्रैन्यूल करने के लिए हम अगर इस 15 आवरली चार्ट या 15 मिनट चार्ट में जाते हैं, सो वी कैन ईजिली सी दैट यू नो दिस 2030 लेवल्स माइट बी समथिंग विच विल गिव अ वेरी प्रिसाइज व्यू कि इसमें फर्दर अपसाइड है या अभी वो करेक्शन के लिए जाएगी. सो नो मैटर व्हाट, एम्फेसिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज विच आई एम ट्रैकिंग. द नेक्स्ट कंपनी इज़ LTTS. LTTS में मैं ऑलरेडी ट्वीट किया हूँ, एंड देयर शुड बी अ वीडियो विच आई पोस्टेड बिफोर द ब्रेकआउट केम ऑफ द 2800, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. So 2800 levels were broken, and it went to 2880 levels. So theoretically we got a nearly 3.5% in one session. So it already gave a move, and I'm not going to discuss more because all the targets, short term targets, are discussed in that video. वो वीडियो आपको अपर राइट कॉर्नर में मिल जाएगी जो मैं LTTS के लिए डिस्कस किया था. So LTTS, Larsen & Toubro Technology Services, the second company which I had. The third company is LTI. This is Larsen & Toubro Infotech.
इस कंपनी ने भी बहुत अच्छी एक रन दी है. और if we look for a daily chart, so I have already drawn, actually if you go for a weekly chart, so this is a very particular pattern, a very interesting pattern you can see. और ये है typical flag pattern. सो वी वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड जब ये लेवल्स ब्रेक होती हैं. और मैंने ऑलरेडी इसमें जो पोजीशंस बनाई थी 3800 3600 लेवल्स पे, वो मैं लास्ट सेशन में ऑलरेडी बुक आउट कर चुका हूँ. एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड it might dip towards 3900, for at least 4000 would be a very interesting level for me to see how it behaves. And it is poised as per this to go for 4400. So अभी भी इसमें कुछ 200 रुपए की मूव बाकी है, which corresponds to 4 or 5%. Maybe this is also one of the trades I will take in a very short term, and I am actually looking for some dips. It actually didn't give a dip in the last session, and it had a very good run since morning. And as you can see, whenever a run like this happens, it follows with some correction, and this is the and again you see this is a run and then followed by some correction where the buying comes. So I am still waiting for below 4100 preferably, and then I would try to think whether I want to take a position. Right now I have no positions in LTI. So LTI. So LTI is the third company which I wanted to talk about, and we have been tweeting and taking trades since 3600 levels. So हम theoretically इस लेवल में जब वो कंसोलिडेट कर रही थी, हमने तब से पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, और फिर 3800 में भी हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए थे, फिर यहाँ पे पोजीशन बनाई थी. ये जब 4000 में जाके 3980 3990 में जाके इसका रेजिस्टेंस था, तो वहाँ पे हम लोग ये पोजीशंस बुक करके फिर 3800 में घुसे, और नाउ इज ट्रेडिंग अबव नियर 4200 लेवल्स. इट वेंट टुवर्ड्स 4200 at closing, and so going forward I am just waiting for some correction, so that if it dips below 4120, say for example, then it might be something which I will take up. और मैं इसके बारे में ट्वीट भी करूँगा. सो जस्ट हैव अ कीप ट्रैकिंग माई ट्विटर हैंडल. अगर मैं पोजीशन लिया और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उसको ट्वीट भी करूँगा. नो मैटर व्हाट, इस वीडियो में हम लोग ये 3 कंपनीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो यू शुड ऑलरेडी बी ट्रैकिंग दीज. एंड द फोर्थ कंपनी, द बेस्ट वन विच आई हैव फॉर नाउ विद द बेस्ट profit with the best targets is Naukri. So you can see this is a daily chart, and if you look for a weekly chart, so this is also a very typical pattern. And previously there were multiple instances, so you can see I have already it made an all-time high in the month of Jan, and I was able to book here. मैं तब ट्वीट भी किया था, and then eventually it corrected and took support in earlier 34400 levels, and then you see multiple times, and this time also there's been a lot of consideration. Here we can see that whenever it touches this line, there was an immediate sell-off. It touched this line, and within 2-3 sessions, these are daily, there was an immediate daily chart, there was an immediate sell-off, and right now it's round over here. So one of the things which I would right now is on 4700 levels, so I may be tracking 4840 levels or 4820 levels to take some new positions. I have no positions over here. नौकरी में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट गिवन द फैक्ट द वे दिस IT is going to run in the very short term, I think Info Edge or Naukri should be one of the stocks which can give a very good return, because its all-time high is around about 5800 or 5800 levels, and right now it's on 4700 levels. So theoretically 1000 point की है, which round about corresponds to 25 to 22%. So I think this is a very good trade. And if you can see here, so once this region gets broken, it can run really fast and really good. And over 4-5 sessions आप देख सकते हो कि आपका ये डेली चार्ट है. So over 4-5 sessions, if you are able to catch this breakout at the right time, so you might be able to get near about 20 to 25% in a matter of 7 sessions or 5 sessions. So that I think would be a really good and interesting trade. Now the actual move should come above 5000. So this is also a very important, crucial psychological level for this expiry. So I would be
very much entering aggressively above 5,000. But till that time comes, I think it might be that very soon we would be able to see some explicit moves above say 4750 or 4780 levels. So till that level comes, let's have a look, and let's keep a watch on these companies. So these are all about what I wanted to share about the IT companies in the mid cap. Other than, of course, there's Mindtree, there's Coforge, where I always take trades and book profits in all-time highs. So that's all already there. Actually, I've discussed Mindtree also in one of my earlier videos today. So you can have a look into that. It would be in the upper hand right corner, or you will find it in my channel in the latest uploaded videos. So no matter what, these are the four IT companies. I think many a times people are more talking about LTTS and LTI, and definitely LTI, but I think Naukri is one of the trades or one of the scripts which has a much better prospect of giving higher returns agar IT starts moving. So that's all for now. Thanks a lot for listening. Hope this video was helpful, and do comment if you are if you find these videos helpful for your trade. Thank you.